Welcome back to our channel. This video is related to breaking news coming from two opportunity, which is very great opportunity, and they are sending the mail of group discussion, interview mail and direct test opportunity. तो यहाँ पे ये चीज समझना है कि ये जो कंपनी जेंसार है, कुछ लोगों को इसने टेस्ट का मेल रिसीव करवा दिया है एंड सम गेटिंग द डायरेक्ट इंटरव्यू मेल विदाउट गेटिंग द ELCT टेस्ट मे बी. I will show you the exact mail also and I will show you how you can complete this और ये भी बताऊंगा कि why you didn't get the test mail, instead you get the direct interview opportunity in Gensar because I got the, if you see this comment, hi sir, today I got Gensar online interview mail that's it's on 4 November today basically, and but I had not received the ELTAC test link. Please let me know what to do. You don't have to do nothing, just complete your online interview assessment. Maybe they provide you online interview round by accidentally, also technical issue भी हो सकता है, और maybe they are sending online interview mail for some to some students, some candidate. So take the benefit यार, तुम्हारी तो फायदा है इसमें. Please complete it. Yesterday I uploaded 2 videos, 800 opening, 3 bulk opportunity, and here you can see direct test opportunity EY and Deloitte Calyx Stripe. Go and watch this video as soon as possible because you will definitely receive the interview mail, direct test opportunity mail just like Gensar or Infrared. So first I am telling you Infrared opportunity, then we will talk about Gensar and Infrared update full mail. ठीक है, तो पहले ये समझ लो. So this is Infrared trainee quality analyst role. Bangalore location is there, and if you see a trainee quality analyst role is there and people receiving the mail also, you can see invitation for group discussion. So this is the invitation for group discussion and this is the Infrared company basically, and here you can see that trainee quality analyst role is there and is scheduled on Monday at 11 AM. ठीक है, मतलब ये कल का था, तो ये लोगों को रिसीव हो रहा है मेल. ठीक है, प्लीज फाइंड द बिलो गाइडलाइंस, एक्सेप्ट द मीटिंग इनवाइट टू कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एंड 5 minutes at least early to avoid the any last minute issue. Make sure your surrounding are quiet and free of distractions. Now you have to keep in mind your internet microphone enable होना चाहिए and mute yourself while you are not speaking. You are requested to take the group discussion. यहाँ पे ज्वाइन कर लेना. And do's में यही है कि listen to the subject carefully, introduce yourself, be respectful, speak clearly and confident, raise your hand if you want to speak and kindly stay on mute when you are not speaking. जो नहीं करना है वो समझो. Don't interrupt, don't use a loud or dominating voice, don't change your side, speak for or against the topic, and please keep in mind this is the 4th November face-to-face interview will conduct. If you get shortlisted, means if you have been shortlisted in the group discussion, then there will be a offline face-to-face interview at 4th November at any time zone, पता नहीं होगा, इसमें देख लेना तुम. देन सेकेंड राउंड इज योर फेस टू फेस इंटरव्यू बेसिकली, ये सेकेंड ही राउंड है. ठीक है, प्लीज़ मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्लियरली समझ लो कि भाई एलिजिबल कौन है. बेसिकली ये ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 24-25 इज एलिजिबल. जावा DSA एल्गोरिथम, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, दीज टेक्निकल डोमेन दे विल नॉट आस्क यू अबाउट दीज टॉपिक in group discussion. Basically they will ask you in an interview which will be face to face interview. Keep in mind you have to update your resume for this. So keep in mind object oriented troubleshooting and enterprise skill, manual testing, automation testing. They are asking Selenium for testing and Java is a plus point. So please add these domain, and here you can see only enterprise skill is written. So please put these domain in resume to get shortlisted because shortlisting is very easy in this Infrared company. Okay, you have to just put Java. If you know Java, then you must know about Selenium. These two things is very mandatory, and the data structure algorithm is also mandatory. Put in bracket basic, just like Selenium और Java की जगह तुम यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में बेसिक लिख देना. तो यहाँ पे एक हिंट मिलता है इंटरव्यूअर को दैट यू नो DSA एल्गोरिथम बट ऑन द बेसिक लेवल. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऐड करो, देन यू विल डेफिनेटली रिसीव दिस मेल विच विल बी ग्रुप डिस्कशन. और यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, इज नॉट डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन. ठीक है, दिस इज नॉट डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन. बेसिकली देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग. ठीक है, इफ योर रेज्यूमे गेट शॉर्ट लिस्ट, सो यू हैव टू रिसीव दिस mail which you have to complete the GD round very carefully, or do's don't follow, and you have to follow the rules like do's and don'ts. ठीक है, if you follow this then you definitely clear the GD round, then you will receive the interview mail face to face. Complete it as soon as possible and you will definitely get the, and mark my word, you will receive 6 LPA package very easily. Trainee software quality analyst role is there, so please apply it. 24 and 25 only batches eligible. Don't ask me that 26 can apply or not. ठीक है, 24-25 batches eligible. Now moving forward, talking about Gensar 3
mass role opportunity, basically Gen AI automation. Second one is business analyst. Third one is LLM annotation prompt. Now in Gen AI or in this LLM, you can easily apply for both opportunity using one resume, but for this the thing is different. Now understand the qualification first, then I will show you the mail, what type of mail people are receiving, ठीक है, and some receiving the direct interview mail. Keep in mind, direct interview mail, no shortlisting is there, means no test is there, direct interview mail, ठीक है. Now what I am telling you, listen carefully. First I am telling you Gen AI annotation criteria, everything. Now this is a Gen AI BE Beta Computer Science IT Software Engineering is eligible, ठीक है. ME MTech is eligible in any discipline, basically in computer science branch. 3 to 6 LP is the package, and you have to put a Gen AI domain in your resume. Now moving forward, you can see that there is the degrees. ME MTech is eligible, just select from here only, and year of passing only 23, 24, 25 batches eligible, and 26 also can apply for Gen AI. So please submit this as soon as possible. This is your prompt engineering type role labeling. So take domain from ChatGPT, told them that this Gen AI annotation role is there, so please provide me some industrial domain or targeted domain to put in resume. बाकी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ना ये नोटेशन लेबलिंग और प्रॉम्प्ट, ये वाली लाइन पूरी लाइन को अच्छे से रीड करोगे. ये नोटेशन लेबलिंग प्रॉम्प्ट इज मैंडेटरी to put in resume and these interpersonal skills. That's it. Now moving forward, telling you about business analyst. Business analyst 25-year pass out only is eligible. Operation technology MBA postgraduate diploma in supply chain technology management is eligible. Now if you see here, there will be, maybe if they are, let me check first. Yeah, there is multiple batches, but only 25 batches eligible, because here is clearly mentioned only pass out here 25 is eligible. Now these are the required skill, put in resume, get shortlist. Now moving forward, LLM annotation prompt, you can easily apply for both opportunity with the single resume. And here who is eligible, you can see that master's degree in STEM, only masters wale eligible, that's why I told you can easily apply. 0 to 6 year of experience is needed. STEM background, ठीक है, if you have a और checking domain और medical और chemistry, finance देख लो अपने हिसाब से, but please keep in mind full name as per Aadhaar card is very mandatory, otherwise you will receive this mail or complete the interview also, but in a document verification they will reject you. So please apply it as soon as possible. Now I am telling you what is the package for this. For masters annotation prompt, 12 LP is the package. For this 6 to 7 LP, and here also 3 to 6 LP is the package. Now I am showing you the mail. This is the Gensar resume required mail, and there is dear aspirant, greeting from Gensar, and this is the test name, ELTAC test. And as per next process, we require your CV. Kindly share a CV on urgent basis to schedule your interview, technical interview, ठीक है. This is your online assessment mail. Now keep in mind and check once what I am telling you, just listen carefully. Round 1 online assessment, round 2 will be, this is your round 2, ठीक है, direct means interview. And kindly join the link sharp by 3:30 PM on 1st November, ठीक है. तो दिस इज ऑनलाइन असेसमेंट विच इज ELTAC नेम, एंड योर वेबकैम एवरीथिंग विल बी वर्किंग, ठीक है, अच्छे से होना चाहिए, और 5-10 मिनट पहले ओपन करना है. मैं यहाँ धुंधला बहुत है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है. और म्यूटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब ये होने ये वाला कि ये MS टीम में होने वाला है. MS टीम में किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ. यहाँ पे देखो क्या होता है. माइक्रोसॉफ्ट टीम में हमने ज्वाइन किया, वहाँ पर सारे बच्चे होंगे, लाइक 10 लोग होंगे. वहाँ पे तुम्हें पेन पेपर पे बोला जाएगा. इस तरीके से हो सकता है, हमारे साथ हुआ है एक बार. पेन पेपर लेना होगा, वहाँ पे वो क्वेश्चन दिखाएगा या बोलेगा, ऑप्शंस बोलेगा, तो मैं उसमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना होगा अपने पेन पेपर में. लाइक क्वेश्चन 1 का आंसर A है. फिर जब तुम इस तरीके से बहुत सारे कर दोगे, लाइक 2 का B हो गया तुम्हारे हिसाब से, और 3 का C हो गया, इस तरीके से अगर जब तुम लिख लोगे पूरा, तो तुम्हें एक लिंक दे दी जाएगी वही MS माइक्रोसॉफ्ट टीम में, चैट में. उस लिंक को ओपन करके पूरी इमेज की पिक्चर लेके तुमको अपलोड करनी है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. इस तरीके से होने वाला. अगर इफ़ यू क्लियर दिस, then you will receive interview mail. But there is something weird that some candidate, means I just saw you beginning of the video one comment that he got the direct interview mail. So what is that? So अगर तुम यहाँ पर देखोगे, as
per next process. We require a CV. Kindly share resume on urgent basis to schedule your technical interview. See, basically if you crack this, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि if you crack this then you will receive the interview mail, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि शॉर्टलिस्टिंग है कि नहीं, बट there is highly chances if you crack the ELTAC तभी तुम्हें इंटरव्यू का मेल आएगा. बट some don't think too much, just complete interview. मे बी तुमको ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, then you will definitely get the offer letter, or if there is HR round then you have to complete the HR round first then receive the offer letter. और पैकेज भी बहुत अच्छा होने वाला है. I already told you मास्टर्स के लिए 12 LPA है, 6 LPA फॉर अ BTech फ्रेशर. तो वेट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इंटरव्यू का मेल आया है तो डोंट गो एंड डोंट थिंक अबाउट टेस्ट. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तुम अपना इंटरव्यू पे ध्यान दो, इंटरव्यू कंप्लीट करो. टुडे इज़ योर इंटरव्यू 3:30, तो कंप्लीटेड. इफ़ आई गॉट एनी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी दे दूंगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड. सो प्लीज़ कीप इन माइंड, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर माई वीडियो ऑल्सो. 3:30 PM इज़ द टाइम जोन. सो आई डिडंट रिप्लाइड येट. ठीक है, तो मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ कि फोकस ऑन ओनली और इंटरव्यू. और फिर अगर कुछ वहाँ पे पता चलता है आई विल क्रिएट वन मोर वीडियो जहाँ पे मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस का दे दूंगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. ठीक है, बिकॉज पीपल गेटिंग एंड कंस्टेंटली रिसीविंग द मेल फ्रॉम annotation, prompt domain and business analyst and labeling prompt GenAI. Like this video, to subscribe my channel and go and watch hidden trade openings, EY, Deloitte, mass opportunity. Thanks for watching.